Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Sadia Said and I welcome you to Double International Publishers. In this video, we're going to learn about letter R from English 4+. Let's get started. Assalamu alaikum pyare bachcho. I hope everyone is fine and I'm fine too. Alhamdulillah. G. So here we are with a new letter, G, and the letter is R. Q के बाद आता है R. Very good. And the sound of Q is Q. Good. तो सबसे पहले हम क्या करने जाएंगे? We're going to listen to the story of letter R. और आप नोट करेंगे कि कौन-कौन से words R से start होते हैं. Let's enjoy. The story is about Raza. One day, Raza was playing with his racket in the park. अभी वो खेल ही रहा था कि स्काई पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो अपीयर हो गया. वाओ, ब्यूटीफुल. और वहीं पे पास एक रैबिट रोजेस के दरमियान में बैठा हुआ था. और भला वो क्या कर रहा था? The rabbit was looking at a rocket flying in the sky. Whoa! तो अब आप मुझे जल्दी से बताएं, इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में कितने वर्ड्स आपने नोट किए जो R से स्टार्ट होते थे? रज़ा, रैकेट, रेनबो, रैबिट, रोजेस एंड रॉकेट. यस, गुड. चलें जी, अब हम चलते हैं बुक के पेज के ऊपर और वहाँ ये नोट करते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर्स R से स्टार्ट हो रही हैं. तो बुक के टॉप पे ब्लू बॉक्स के अंदर वी हैव two shapes of R, the capital R and the small letter R. And the sound of R is R, R, R. चलिए जी, अब पिक्चर्स कौन कौन सी हैं? The first picture is of a ring. कहाँ पहनते हैं हम ring? Finger पे. Very nice. R, R, ring. Then is a rose. Beautiful smell of a rose, है ना? R, R, rose. Then you have a rocket. R, R, rocket. Then you have a cute little rabbit. R, R, rabbit. और जल्दी से rabbit की तरह हॉप करके दिखाओ टीचर को. The last picture is of a racket. Yes, racket. चलिए जी, आपने क्या करना है? पहले इन पिक्चर्स को टीचर के साथ डिटेल में डिस्कस करनी है. And then you are going to repeat the sound of letter R, which is R. Let's learn to write R. Capital R को लिखने के लिए we're going to draw a straight line down, make a semicircle and a slanting line down. To make a small letter R, you're going to draw a straight line down, go up and make a curve. पहले हम करेंगे pre-writing practice, जिसके लिए we're going to write R in the air, on the wrist, on the sand trays, और फिर end पे board पे लिखेंगे. जब अच्छे से practice हो जाएगी तो फिर हम book के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे एक pencil या crayon से इसकी writing करेंगे. End पे हम focus करेंगे word building activity पे. There are 3 words on the book. Rat, red and rug. You're going to read this with the help of your teacher. STEM activities. सबसे पहले आता है science और science में आपने बच्चों के साथ rainbow की discussion करनी है. Then is technology और technology के लिए book के पेज के ऊपर जो QR code मौजूद है उसे scan करें और बच्चों के साथ देखें. And then you have engineering और engineering में क्या होता है? Yes, we make things. तो यहाँ पे Play-Doh से rainbow बनाना है. And then last is mathematics and mathematics is all about counting here. तो आपने बच्चों को rainbow colors की counting करानी है. Review exercises. चलें जी, अब हम करते हैं interesting सी activities. तो the first one is circle the pictures that start with the letter R sound, which is
تو ہمارے پاس کچھ پکچرز ہیں. ان میں سے آپ نے ان پکچرز کو سرکل کرنا ہے جو ر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو وہ کون کون سی ہے؟ ریبٹ, رنگ. یس. اور کون سی پکچرز ہیں؟ اور سے دیکھو. نہیں ہے نا؟ تو there are these two. We have another activity. Say and write the initial letter. Capital letters ہیں یہ جو کہ آپ نے لکھنے ہوں گے. تو کیا ہے یہاں؟ We have a few pictures اور ان pictures کے نیچے ان کے names لکھے ہیں مگر ان کی beginning letter missing ہے. جس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پکچر کو دیکھ کے بتانا ہے کہ نیم کون سا ہے اور پھر اس کی بگننگ لیٹر جو کہ کیپٹل میں ہوگا وہ لکھیں گے. The first one is a nest. نیسٹ بھلا کس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ کون سی ساؤنڈ ہے؟ جی این کی. تو یہاں آئے گا این. پھر ہے پیچ, پ پی. پھر ہے نرس, این. کوئین, کیو. روز, آر. کویل, کیو. آکس, او. پیرٹ, پی. اینڈ نیٹ, این. گڈ. پیارے بچوں, I hope you've learned a lot about letter R sound. تو آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, اسپیشلی آف دا پریکٹس ایکٹیویٹیز. جی پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.